object-oriented programming languages, we have seen these terminologies and overloading, data hiding, and polymorphism. Some examples and the theory part. What we have to see is what are, according to these terminologies, how can we write a different perspective in Python using classes, objects, and its attributes. That's a very, I can say, important part today, because classes has made a significant change in programming languages. Right today, what we use as agile development is totally, can say, the most advanced software method to write any kind of application. Right. So first, what we'll do is we'll use a keyword named as class. I'll write the syntax. How you write a class? So class is a keyword, and you can take any name, right, which is not reserved in system keywords. So this class name could be anything apart from the system defined keywords. So you can take this as any name, and this class, as it is appearing in green color, will be a class name. Now, how to define it? For example, suppose I'm using a class as a bike, colon. I'll take some variables which in class are named as attributes or properties, right? Properties or attributes of that class. So my class name here is bike. So what does that bike consist? It consists of its name, right? I won't give any parameters right now. I'll just define it. And if it is a bike, I'll initiate the gears. Now I have two parameters. Bike. Bike is the name of the class, right? Name and gear are the variables inside the class with default values. So string default value is nothing. I have not specified anything here as a name. I'll give it later, right? And for gear, it is 0. So being a number, if I want to specify it, what will be? It will be like a number, right? So that won't have any curly braces, double quotes. So here, what I'm doing is I'm creating a class named bike. Now to initiate this, we need to create an instance. The moment I talk about instance, objects are included, right? So how do we define an object? An object, if you remember, is called an instance of a class. So this is how you define an. Now, in this case, bike is a class. Then we create objects similar to that, and we can give any object name. Just to identify what object names we are using for which classes, we'll use it as bike1, bike2, or if you are having specific purpose, we'll name that objects accordingly, right? So for example, as in syntax, you can write it as object name. This is your object name, and you need to call the constructor of your class. Currently, according to this syntax, class name, my constructor name will be same as of class. So my class name is class name. Parenthesis, which indicates that this is a constructor. Now with no parameter. Now let's create an object. I'll write the class as bike. Take a variable. Take another variable. I'll take it as bike1. I'll call the constructor. Now see, this has to be written within the class. So bike1, where okay, let's O as 0. Now bike1 is a variable name as an object, right? And what I'm calling here as an bike. So this is the constructor. Now here bike1 the
object of the class. So I'll note it here so that you may remember the name as object name bike1 is the object of the class. So if I want to deal with bike class, I'll be referring with bike1 as an object name. So we can use this to access the class attributes. Remember these bike1 can be used to access the class attributes. As it is. I'll keep less complexity first to understand the concepts, how it can be written, and then any application, any program we can be moving forward with. Now, this is how you write a class and create an object, right? Currently, we are not accessing any of the attributes using object. We are just declaring a class, getting some attributes, and creating an object of that class. Now, what we'll do, we'll try to access class attributes using objects. Like to modify a little bit, there's a dot operator we use whenever we call it as in using the object. So my object name is bike1. What I want to access, I want to access the attributes from bike class with name. So dot operator and the attribute name. Now there's no name given to it. So I'll use it as mountain bike. I want to access the bike1 dot gears, which is already defined because name is empty string. So gear can be default whether it is zero as treated as neutral, right? You can give it as first, second, third, neutral, anything, right? If it is a car, you can use any 1, 2, 3, 4, 5 and rear. So accordingly, it will be working. Now here, see, the last one is printed, mountain bike, and then after gear is there, right? So here what we are doing is we used bike1 dot name and bike1 dot gear to change and access the value of name and gear attributes. Now, if I want to use both Python class and object, I can do it. I'll write it in a more simplified and formatted way so that you can get the results in a very good form. So firstly, take a class, name a class, take some attributes. Create an object of it. Create an object. So take the same variable. Now what we need to do, we need to access the attributes and assign some new values. So I'll use it as bike one dot gear. I'll change that value bike one dot name. So I'll keep the name same. So the name same. Now we'll print it in a formatted way so that it is easy to understand. So name bike one dot name. So you need to make sure that this printing name should be associated with that name object only. Otherwise, this string will be different and the value will be different. And what we have is second as gears. So we have bike one dot gear. Now we are having name from bike class, which is again named as mountain bike. By accessing the class using this dot operator, it is returning us as mountain bike. And gears we have indicated initially as 0 in the class, which added this. So this is the newest value in this stack, which is holding gear value as equal to 11. So that value will be replaced by 11. If not done, 0 will be appearing here as a default value, which you have given in the first statement. Here you can see the output as 0, right? So this now is being replaced with 11. So the values can be changed. Now, there might be a question that, can there be multiple objects created in a Python class? Yes, right? Suppose for an example, we are working in an organization where there are multiple employees and you want to save a record using their ID, name, department, mobile phone number, address, which department they are working, what position they are holding, what salary they are having,
right? And lots of details. So you can take multiple attributes, right? So I'll write the title here as creating multiple objects. Now, how do we write it? I'll take a class as employee. This is a class employee. I'll define employee ID. I'll initialize it. I'll create two different objects, right? Just say as employee one, this will be for one employee. I'll call the constructor of the class. What is my class name here? My class name is employee. So the default constructor. Default constructor means class same as class name. Otherwise, it will be treated as method. Getting my point? C. If this is not my constructor name, that will be treated as a method. So if I want to introduce a method, it must be different as compared to my class name. So if I'm writing same as a class name, it will be treated as a constructor. Employee objects. Employee 2 from the same class. Right? You're trying to access here. Now what I'll do is employee 1 using the dot operator, create an ID. Attributes we have to give it. We'll deal it with this name and give it as 1001. So this is my, I'll write it in a formatted form that employee ID is this. Employee 1, I'll be printing here as 1001 dot employee ID. Now for second, employee 2 is the object name dot employee ID, dated as 1002. And I'll copy this statement as it is and just change the variable names. So here it will be same employee ID. Instead of 1, we're going for second object. See what you're getting? Whatever is defined is outside the class. What I'm trying to do is, this is my class, right? It has attributes of 2 employees. It is holding the data of 2 employees. So there are multiple objects. So you can have 2 or more objects also. You can do this for practice. You can take number of employees, considering 10 employees. You can fill up information for their IDs, their names, their mobile numbers, their area where they live in, the designation, what they possess. So here you can do in that way. So what here is we have created 2 objects. Class. So class has 2 attributes. We have taken that as in objects and called it. To call any object within the class, we use this dot operator. This is very important. Dot operator is used. Now there's a concept called as self parameter. What does this do? It refers to the current instance of the class. Now, this is easy that I need to refer this. What if there are multiple classes also, right? So I need to tell Python compiler to which class I am referring, right? So if it is a current instance within the class, it is easy that there's only one class and it will be referring directly to here. If there are multiple, you need to access that class and then define the object so that you can access the attributes. So we can use anything instead of self, but it must fit the parameter of any function which belongs to the class. Now, as in, if you are having here as multiple parameters, I guess I say we are having an ID, you have name, you have a cell number, you have address, you have department, then you have a city. Now, these are its multiple attributes of an employee. What we have taken here is just called as simple as ID. So this was only one parameter, right? So multiple parameters अगर हमें handle करने हैं ना, तो इस तरह से हम लोग एक employee के multiple attributes दे सकते हैं. Now the moment how you are calling it, ID, name, cell number, address, city, उसी तरह से
उसी तरह से तो यहाँ पे आईडी, नेम, सेल नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट और सिटी देना होगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, जैसे आप डेटा गलत कॉलम में सेव करें वैसे वो सेव हो जाएगा। कि अगर सेल नंबर एंटर कर दिया तो बोलेगा कि भाई नेम तो स्ट्रिंग ले रहा है एंड यू आर एंटरिंग अ नंबर, तो डेटा टाइप भी गलत हो जाएगा। सो यू नीड मेक श्योर कि आप जैसे तो जिस तरह से कर रहे हो ना, उसी तरह से आपके डेटा भी सेव हो जाए। सो यू कैन डू दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन पाइथन, राइट। इनिट मेथड भी एक होता है विच इज डिफाइंड बाय सिस्टम, अंडरस्कोर अंडरस्कोर टू टाइम्स init and again underscore underscore. Now this is a method which is used to make an instance of a class in Python. इस तरह से लिखा जाता है, right? This is called as a function. It is used to see the object's attributes, which is referred to as constructor. Constructor आपको समझ में आ रहा है? This is a constructor, right? क्लास के नाम के जैसा ही अगर उसका नेम है, सेंसिटिव अगर नेम से, इट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड थर्ड इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसमें अगर कुछ पैरामीटर्स नहीं दिए हैं तो इट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर कुछ पैरामीटर दिए हैं हमने, जैसे कि अभी दिखाया था मैंने आईडी नेम वगैरह के, दिस इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं हम लोग, राइट, रेदर देन एट्रीब्यूट आई एम पासिंग एंटायर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या करेगा, उसका क्लोन बनाएगा। तो वो क्लोनिंग को हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम्म आई विल सी द इंस्टेंसेस, क्लासेस, कि ये किस तरह से किया जा सकता है। सो नाउ इफ आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट, तो मैं उसको डॉट ऑपरेटर से तो एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। अब इसी को सेल्फ पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे इनिट लिया था उसी को मैं करके आपको दिखाता हूँ। विल टेक अ क्लास एज एम्प्लॉय, क्योंकि सेम एग्जांपल रखे हम दिखाएंगे। अब एम्प्लॉय काउंट करके एक वेरिएबल लिया, उसमें इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू। विल टेक अ डेफिनेशन विच इज यूज टू रिटर्न रेफर एज डी एफ, राइट, इनिट। नाउ सेल्फ कॉमा, दो वेरिएबल ले लेते हैं एज नेम और सैलरी। तो एक स्ट्रिंग हो जाएगा, एक कोलन, बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट द कोड। अब इसमें क्या लिखना है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू जो भी आप नाम दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। सेल्फ डॉट दूसरा पैरामीटर है सैलरी, सैलरी इक्वल टू सैलरी, राइट। तो ये दो वेरिएबल्स हो गए। अब क्लास नेम पे काउंट करना है हमें, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट क्या वेरिएबल लिया है, ईएमपी काउंट। सो ईएमपी काउंट टू 1। अब दूसरे डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, वो काउंट डिस्प्ले करेंगे कि कितना हो रहा है, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं। तो अगेन डेफिनेशन क्या लेंगे, नाम, डिस्प्ले काउंट, और सेल्फ, मतलब ये दोनों वो क्या करेगा, नेम और सैलरी काउंट करेगा। नाउ विल प्रिंट दिस, टेक इट एज टोटल एम्प्लॉयज, इसको परसेंट में डाल देंगे, टू बी असाइंड बाय डॉट ऑपरेटर। और एक फंक्शन लेके दिखाता हूँ, विल यूज डेफिनेशन टू डिस्प्ले एम्प्लॉय। क्या उसमें मतलब क्या नाम डाला था, डिस्प्ले एम्प्लॉय, और द सेल्फ प्रिंट नेम सेल्फ डॉट कौन सा वेरिएबल आएगा, नेम वाला वेरिएबल, कॉमा दूसरा वाला क्या है,
salary. And what we have as self dot salary. This is how it is written. अब डेटा पास करना होगा, राइट? ये सब डिफाइन तो कर दिया। अब देखो क्लास के अंदर क्या लिखते हैं। इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वुड क्रिएट पोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय वन लेते हैं, क्लास कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर। फिलहाल के लिए डिफॉल्ट इसको बोलते हैं जिसमें जो भी पैरामीटर्स नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं और हमने कॉल भी किया है, सो दोनों में फंक्शंस भी लिए हैं। तो यहाँ पे कितने दो पैरामीटर्स हमें कॉल करने होंगे। सो द टू पैरामीटर्स, सपोज पहला वाला है नाम, तो नेम, और सेकंड है मान लो उसकी सैलरी। हम्म ऑब्जेक्ट इज सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल नेम ले लो एम्प्लॉय टू। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। वेरिएबल्स कितने होंगे, दो। अब डेटा डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले के लिए हमने फंक्शन बनाया है, राइट? एम्प्लॉय वन डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय। और फिर प्रिंट करते हैं। दूसरा फंक्शन में हमने बनाया ना टोटल के लिए, टोटल एम बोल देते हैं परसेंट डी। कितने डेटा एंटर किए हमने, क्या क्या डेटा एंटर किया हमने, वो सब यहाँ पे आ रहा है। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ माय फर्स्ट एम्प्लॉय, दिस वाज as with having salary of 2000, and second as money and the salary was 5000। अब ये जैसे मैं एंटर करते जाऊंगा ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता जाऊंगा, ये क्या करेगा, काउंट करता जाएगा कि कितने एम्प्लॉयज हो रहे हैं। वेर इन आई स्टार्टेड माई इनिशियल काउंट विद जीरो, राइट? शुरू में कुछ नहीं था, सो दिस वाज सेट, काउंटर सेट टू जीरो। नाउ इट इज एज वन एंड टू। तो जितने भी इंस्टेंसेस होंगे ना वो काउंट करता जाएगा। सो दिस काउंट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स, राइट? एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद दिस एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स तो लगेंगे, तो उतने एट्रीब्यूट्स होते जाएंगे स्टिल। ओके, नाउ देर आर सम इनबिल्ट कैन से एट्रीब्यूट्स हियर। तो जैसे कि डॉक है, नेम है, मॉड्यूल है, वी हैव बेसिस, डिक्शनरी अगर बोलेंगे तो डिक्शनरी का भी आ जाएगा। तो I'll list down here and we'll see an example that how these attributes, default attributes can be done। ये एक होता है, ये किसके लिए यूज करते हैं, इट इज अ डिक्शनरी containing the class namespace। ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज क्लास डॉक्यूमेंटेशन। एक क्लास के बारे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना है ना, so in real time application we use this kind of documentation string of none if undefined।
अगर नेम स्पेस बोल रहे हैं तो ये हो गया क्लास नेम, जो नेम कंसिडर करता है डिफॉल्ट आप जो भी देते हैं वाया दिस नेम क्लास, दिस इज मॉड्यूल नेम इन विच द क्लास इज डिफाइंड। एंड बोल सकते हैं एम्प्टी टपल, an empty tuple containing the base classes in the order of their occurrence in the base class list. Yes, चैट में कुछ आया है। वो इनिट तो हमने शुरू में ले, वी हैव सीन द एग्जांपल। ये वाला यहाँ पे लिया है ना हमने। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज, write the here also, it is a special method can say, which often is treated as is called class constructor, और जैसे उस नाम है उसको इनिशियलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। जब भी आप नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो ये कॉल होगा। ओके, creating the class, accessing the attributes, creating instance of objects, creating multiple objects, accessing them। ये कुछ इनबिल्ट मेथड्स भी देख लिए हमने, बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट्स हैं ये। I'll write the title here so that you can remember it। क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं ये सारे। नाउ इफ आई हैव क्रिएटेड ना, आई कैन डिस्ट्रॉय ऑल्सो। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर, जब मैं कंस्ट्रक्टर बोलता हूँ तो द वर्ड इट सेल्फ सेज टू कंस्ट्रक्ट, कि उसको बनाओ। बनाने के बाद कुछ तो मेमोरी अलोकेट होगा, वहां पे कुछ तो स्पेस दिया जाएगा, एंड वॉट एवर एट्रीब्यूट्स वी आर कॉलिंग ना, तो उसको फंक्शन देके हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपको दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एग्जीक्यूशन करना है, दैट कैन बी डन थ्रू डिफरेंट फंक्शंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो टू और मोर डेफिनेशंस लिए हमने। एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, देन टू टेक द डिस्प्ले ऑफ काउंट, और एम्प्लॉय की डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए। तो ये तीनों फंक्शंस एक ही क्लास में थे। सो देयर वाज सिंगल क्लास एम्प्लॉय वेर इन देयर वर थ्री डिफरेंट फंक्शंस, और वो फंक्शंस में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे। राइट, सो एट्रीब्यूट्स आर व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। परफॉर्म करेंगे वो एट्रीब्यूट नेम्स होंगे, और कहाँ से ये रेफर हो रहा है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एन एम्प्लॉय। राइट, दैट कुड बी एनीथिंग डिफरेंट। तो ये सब चीजें डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। नाउ वंस इट इज क्रिएटेड, आई ऑल्सो नीड टू डिस्ट्रॉय इट, क्योंकि उसको मेरे को डिलीट भी करना होगा। सो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज गार्बेज कलेक्शन। आई लेट द पॉइंट हियर एज टेक्निकली जब हम बोलते हैं उसको, तो उसको गार्बेज कलेक्शन बोला जाता है। फर्स्ट रिड्यूस जावा, क्या होता था, क्रिएट हो जाते थे, बट एज इन सी और सी प्लस में जैसे मेमोरी लीकेज का इशू था पॉइंटर्स के वजह से, जावा टैकल्ड इट। टैकल्ड मीन्स उसने यूजर पे डिपेंडेंसी नहीं छोड़ा है, इट कंपाइलर विल टेक केयर ऑफ दैट मेमोरी लीकेजेस।
एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन पूछते हैं जावा या पाइथन के लिए कि पॉइंटर्स होते हैं या नहीं, उसमें टेक्निकली पॉइंटर्स तो होंगे ही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेफर करेंगे, एंड इफ आई हैव एन एड्रेस टू रेफर तभी मेरे को डेटा मिलेगा। लेकिन प्रिविलेजेस देने चाहिए इफ द डेटा इज अवेलेबल टू एवरीवन। अगर मेमोरी लीकेज से कोई भी बैकडोर से आपका डेटा चेक कर रहा है, दैट विल बी एन सिक्योरिटी दैट हैंडल्ड बाय जावा ऑटोमेटिकली। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एक बार यूज किया और बाद में एप्लीकेशन में कभी भी मेरे को वो यूज नहीं हो रहा है, सो मेमोरी विल बी अनयूज ना, मतलब एक बार का ऑब्जेक्ट है, बाद में उसका कभी भी यूज नहीं हुआ है, एंड यू नीड टू वेट फॉर द अदर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स टू लोड ऑन द मेमोरी एंड डिस्प्ले माय रिजल्ट। सो एट दैट इंस्टेंस द कंपाइलर डिसाइड्स कि ऑब्जेक्ट रिमूव कर देते हैं, उसको डी रेफरेंस करते हैं, and I'll allocate some another object on that instance and I'll execute my program। तो मेमोरी का इशू नहीं होगा। ये जो सब चीजें ऑटोमेटिकली है ना, दैट इज नथिंग बट द डिस्ट्रॉइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब अगर वो ज्यादा देर तक डी रेफरेंस हो रहा है, तो वो कुछ काम का नहीं है ना एप्लीकेशन में। वो डेटा, वो जो रेफरेंस हमने बना के रखा है, तो उसको डी रेफरेंस करते वक्त जो कॉन्सेप्ट यूज कर, उसको ही प्लेन लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्शन बोला जाता है, राइट। सो व्हाट डज पाइथन डू? पाइथन डिलीट्स अननीडेड ऑब्जेक्ट्स जो जरूरत नहीं है, automatically from the memory space। So the process by which Python periodically reclaims, उसको नहीं मालूम कि कब करना है, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर मेमोरी। बल्कि आजकल के एप्लीकेशंस जब इंस्टॉल होते हैं ऑन क्लाउड और ऑन एनी सर्वर ऑन डेस्कटॉप, यू हैव हाई कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इश्यूज आज के डेट में नहीं होते। बट इफ यू हैव अ बल्की एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट साइड ना, तो ये इश्यूज रेज होंगे। या फिर क्लाइंट के मशीन पे दूसरे एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल्ड हैं, तो मेमोरी लेस होने की वजह से ये इश्यूज रेज हो सकते हैं, राइट। सो पाइथन periodically claims these block of memory that which are no longer in use, कि बहुत देर से वो कॉल ही नहीं किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, मान लो कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डिफॉल्ट नहीं है क्यूआर कोड स्कैन करने का, तो इफ यू आर यूजिंग, डाउनलोड किया आपने और एक बार ही आपने यूज किया है, और 2-4 महीने के बाद आप देख रहे हो कि आपका सिस्टम आपको नोटिफाई कर रहा है कि ये जो ऐप आपने इंस्टॉल किया है और फ्यू मंथ्स अगो यू हैव यूज्ड इट ओनली वंस, तो वो रिकमेंडेशन में डाल देता है कि इसको अनइंस्टॉल करें, राइट। इन सच वे इंटरनली जो भी वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस जो भी हम क्लासेस में क्रिएट करते हैं ना, उसका एक मेमोरी, एक अलोकेशन हो जाता है। एट दैट इंस्टेंस कंपाइलर को थोड़ा सा डिसाइड करने के लिए दिया जाता है कि इसको निकाल दें क्या, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत टाइम से नहीं हुई है, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ गार्बेज कलेक्शन। सो गार्बेज कलेक्शन रन्स ड्यूरिंग योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब वो ट्रिगर होता है ना, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो होता है वो निकाल दिया जाता है, एज इन इट इज रीच टू जीरो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? गार्बेज कलेक्शन सबको समझ में आ गार्बेज कलेक्शन के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, क्योंकि वी हैव स्मार्ट कंपाइलर्स। इनिशियली जावा में कुछ प्रोविजंस दिए थे दैट, क्योंकि वो नया था कॉन्सेप्ट कि गार्बेज कलेक्शन हम लोग खुद करें तो बेटर। जैसे कि एमअलॉग यूज किया जाता था मेमोरी एलोकेशन, तो टिल्ट साइन से उसको निकाला भी जाता था। तो दैट टिल्ट साइन इन सी एंड सी प्लस इंडिकेटेड दैट वी आर यूजिंग अ डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर जैसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है टेक्निकली, मतलब अगर आप एक्सप्लिसिटली कॉल करना चाहते हो तो ऐसा तो आपको नहीं मिलेगा, बट इंटरनली कंपाइलर हैंडल्स ऑल दिस, राइट। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको कि सी सी प्लस प्लस जैसा अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर है तो आपके पास डिस्ट्रक्टर है क्या, यू कैन टेल दैट देयर इज गार्बेज कलेक्शन विच ऑटोमेटिकली कलेक्ट्स सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर नो लॉन्गर इन यूज्ड और बहुत टाइम से नहीं हुए। नाउ देख क्वेश्चंस में आ रहा है इसकी कितने टाइम के बाद ये होगा, राइट। कब आप डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अभी आपको डी रेफरेंस करना है या फिर कभी यूज में नहीं आएगा इन फ्यूचर। दैट्स अगेन अ डिबेटेबल क्वेश्चन, कि अगर मान लो कि आपके पास मेमोरी इतनी है कि आप 100 इंस्टेंसेस स्टोर कर सकते हो, तो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद डिफॉल्ट जो भी सेटिंग्स हैं वेरिएबल के, मान लो कि
like 40 instances consume हो गए, right? Now you have left 60 instances. Now your application will be an executing running state में होगा क्योंकि वो data carry कर जाएगा. Now the moment we have 60 instances तो वो 60 employees का अगर data store कर रहा है तो 100th instance को 60 employees का data fill up होगा, right? Now memory is full. There are no more instances. हाँ, ये मैं for कब कॉल होना है कि गार्बेज कलेक्शन का concept उन्होंने किस तरह से बनाया है एंड हाउ शुड इट वर्क. तो एट दिस इंस्टेंस व्हाट विल हैपन इज इफ आई वांट टू इंसर्ट 61st इंस्टेंस. 60 तो मेमोरी फुल हो गया. 61st इंस्टेंस अगर मेरे को पुटअप करना है इट विल शो कि आपका मेमोरी फुल हो चुका है. नाउ देयर इज अ पॉपअप. तो यूजर क्या करेगा, मेमोरी में जाके कुछ डिलीट करेगा, राइट? इन आइडियल सिचुएशन मेरे पास 100 ब्लॉक्स थे जो कि भर चुके हैं. तो अब क्या करेगा कंपाइलर, ऑटोमेटिकली वो सर्च करेगा आउट ऑफ ऑल ब्लॉक्स विच इज द लीस्ट कॉल्ड. अब उसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स वर्क होंगे. लीस्ट यूज्ड, लीस्ट कॉल्ड, नेवर कॉल्ड. फिर उसमें 10 बार कॉल किया होगा, 5 बार किया होगा, 1 बार किया होगा, या फिर इंस्टॉलेशन के टाइम ही पूछा था उसके बाद कभी नहीं यूज किया. सो डिपेंडिंग ऑन दीज यू कैन से डिफरेंट एल्गोरिथम्स ना will delete one instance और जो नया आ रहा है 61st, राइट, दैट विल बी ट्रीटेड एज 101 इंस्टेंस. वो उस मेमोरी अलोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा, राइट? अब ये सिनेरियो आजकल के हाई कॉन्फ़िगरेशन में बहुत कम होता है, राइट? बिकॉज वी हैव इनफ स्टोरेज, इनफ प्रोसेसिंग पावर टू हैंडल दैट काइंड ऑफ डेटा. समझ में आ रहा है ये गार्बेज कलेक्शन? ये सब जो चीजें हैं दिस इज हैंडल्ड इन दी बैकएंड. लास्ट असाइनमेंट देना बाकी है. आई शेयर दैट. ये सेशन होने के बाद आई शेयर इट. यहाँ तक ये सारी चीजें आपको समझ में आया? दीज पॉइंट्स आर थ्योरेटिकली. अगर आप मतलब ये कि देखो एक कॉन्सेप्ट था एज सिस्टम डॉट जी सी. आई पेस्ट इन द चैट बॉक्स. सिस्टम डॉट जी सी था जावा के लिए एक कंपाइलर जो बनाया गया था इन सी लैंग्वेज विच वाज द फास्टेस्ट अमंग ऑल. इसमें क्या होता था, जीसी स्टैंड्स फॉर गार्बेज कलेक्शन, राइट? तो इट वाज एन इन इट्स इनिशियल स्टेट, तो इट इंडिकेटेड दैट कि अगर मेरे को एक्सप्लिसिटली कॉल करना है तो मैं क्या फंक्शन यूज करूंगा, क्योंकि कंपाइलर भी उसी फंक्शन को कॉल करेगा पीरियोडिकली. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फर्स्ट इंस्टेंस को अगर स्टोर करना है तो वो डिलीट किस तरह से करेगा. सो इट विल कॉल सिस्टम डॉट जीसी. जीसी स्टैंड्स फॉर गार्बेज कलेक्शन. नाउ दिस विल ऑल्सो राइट, क्योंकि डिबेटेबल क्वेश्चन है क्योंकि वो मेमोरी ऑटोमेटिकली चूज करेगा. सो दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन कि अगर आपको पूछें तो आप ये फंक्शन का नाम बता दें. सिस्टम डॉट जी सी इज यूज्ड. ओके, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम्स हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ये सब बैकएंड में चलता रहेगा. दैट्स वाई पाइथन का लिखने का जो कोड है ना इट इज लेस कंपेयर टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं. प्रदीप, डू हैव एनी क्वेरीज? I hope it's clear with this class attributes, multiple attributes. ये अगर आपको लग रहा है कि ये this is very small, but there are lots of behind it. If you do have any query, please let me know. And many of you are really working on your assignments. I've seen on WhatsApp जो भी आपने पोस्ट किया है. एंड वेरी गुड कि आप सैटरडे से पहले मतलब सेशन शुरू होने के पहले पोस्ट कर दो. दैट इज वेरी गुड सो दैट अदर्स वोंट बी एबल टू कॉपी. तो अगर आपको आज के डेट पे ये असाइनमेंट्स मिल भी रहे हैं तो यू डू इट ऑन योर ओन. यू कैन टेक इट एज एन रेफरेंस. Okay, so tomorrow what we are going to see is another important concept, that is class inheritance. मतलब
एक क्लास में अगर कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं तो दूसरे क्लास में उसको हम लोग कैसे कॉपी कर सकते हैं, दैट विल बी अ क्लास इनहेरिटेंस। तो वो देखेंगे हम लोग कि पेरेंट क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, and how you can define multiple classes. Then we had some concepts such as overriding and overloading also ना। हाँ ये वाले। तो जब क्लासेस होंगे तो मल्टीपल क्लास हो जाएंगे तो उसमें इनहेरिटेंस भी आता है। तो विल सी दैट ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट्स आल्सो। यहाँ पे डेटा हाइडिंग है एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये चीजें देखना इंपॉर्टेंट है। विल सी दैट टिल विच कोड, ये एम्प्लॉय वाला, क्लास एम्प्लॉय वाला। की एम्प्लॉय जो लिखा है इज क्लास नेम, यू कैन टेक एनी नेम। तो नेम इस तरह से लो कि तुमको रिकॉग्नाइज हो जाए कि वो क्लास में क्या हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स आर इनटू दैट एंटायर क्लास। तो अब जब मैं ये डिफाइन करने से पहले क्लास नेम आइडेंटिफाई लिख रहा हूँ तो मालूम पड़ जाएगा कि ये क्लास में क्या चीजें होंगी। तो द डेटा अवेलेबल इन दिस क्लास नेम्ड एज एम्प्लॉय विल कंसिस्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज ओनली। तो उसमें एक आईडी ले लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0। नाउ दिस इज अ एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो पैरामीटर नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आई लेट इट हियर एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा, मतलब कौन से है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास नेम क्या है, एम्प्लॉय है। तो कंस्ट्रक्ट क्या करेगा, मेमोरी अलोकेट करेगा। नाउ मेमोरी इज अलोकेटेड, राइट, जैसे कि हीप मेमोरी में मैंने अलोकेट कर दिया। नाउ द मोमेंट आई डू दिस, व्हाट विल हैपन इज, उसको मैं बाद में कॉल कैसे करूँ, राइट। उसको मैंने मेमोरी की जगह तो दे दिया, कंस्ट्रक्ट हो गया। बाद में अगर मुझे डॉट ऑपरेटर से उसको कॉल करना है, हाउ शुड आई कॉल इट। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक ऑब्जेक्ट नेम देना होता है, राइट। नाउ यू हैव क्रिएटेड दिस इंस्टेंस फॉर एम्प्लॉय 1, दिस इंस्टेंस फॉर एम्प्लॉय 2। अब देखो जब कॉल करते हैं तो क्या ऑपरेटर यूज करते हैं, वी यूज डॉट ऑपरेटर। तो पहले एम्प्लॉय को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन इट्स पैरामीटर, ये जो एट्रीब्यूट मैंने लिया है इज एम्प्लॉय आईडी, उसको मैंने एक आईडी असाइन कर दिया। उसको प्रिंट कर दिया, ये एक इंफॉर्मेशन हुआ। नाउ हियर दिस डिफॉल्ट विल हैव वन एट्रीब्यूट एज आईडी, ये वाला, ये वेरिएबल नेम होगा एम्प्लॉय आईडी, उसको यहाँ पे हमने कॉल किया है। देन सेकेंड इंस्टेंस क्रिएट किया था फॉर एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 2 का इंफॉर्मेशन दिया, आईडी नेम दिया उसका 1002। ये हो गया सिंगल इंस्टेंस, राइट, एक ही पैरामीटर है, एक ही एट्रीब्यूट दिया है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स अगर लेना है तो नेम और सैलरी, दो एट्रीब्यूट्स लिए ना हमने। तो उस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय 1 में उसका नेम पास कर दिया और उसका सैलरी पास कर दिया, उसको स्टोर कर दिया एम्प्लॉय 1 में। देयर इज अ कॉन्सेप्ट वेरी गुड, उनके तिथिल ने क्वेश्चन पूछा है। तो अगर सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल किया जैसे कि डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, और हमने ये ऑब्जेक्ट नेम दिया नहीं, तो क्या हो जाएगा, इफ यू आर नॉट गिवन एनी ऑब्जेक्ट नेम इट विल बी अ डैंगलिंग वन, मतलब वो मेमोरी में, हीप हीप मेमोरी में कहीं तो है, बट देयर इज नो स्पेसिफिक एड्रेस। तो उसको कॉल करने के लिए आपको नाम चाहिए, तो नाम उसको दिया ही नहीं है, सो इट, यू कैन नॉट कॉल इट, राइट। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स विथ आर विथ नो नेम, राइट। इस तरह की चीजों को, जिनको नाम नहीं होता उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं ना, एम्प्लॉय जारा कॉमा 2000 इतना दे सकते हैं, लेकिन वो कौन से ऑब्जेक्ट में स्टोर किए, हाउ शुड आई कॉल इट, अगर नाम ही नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड विदाउट अ नेम, दैट इज कॉल्ड एज एनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो ये एक एम्प्लॉय का हो गया, ये दूसरे एम्प्लॉय का हो गया। नाउ यू कैन मेक इट एज ऑटो
डिटेल्स अगर आप वेब पे यूज कर रहे हो या फिर इंटर पैकेज यूज करके जीयूआई बना रहे हो, तो जिस तरह से आप उसको टेक्स्ट बॉक्स में नाम डालते हैं ना, तो उसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, एंड एम्प्लॉय 1 2 ऐसा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, एंटायर डेटा इज सेव्ड। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, डेटा डिस्प्ले किया है और कितने एम्प्लॉयज हैं उसका काउंट भी दे रहे हैं। क्लियर तितिल? एनी क्वेरी? डेफिनेशन, डिस्प्ले काउंट फंक्शन ये वाला ना। सी, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं हमें देखना है। डिपेंडिंग ऑन माई ऑब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आई क्रिएट एंड आई कॉल देम, जितने भी ये इंस्टेंसेस क्रिएट होते जाएंगे ना वो कॉल करेगा। सो दैट इफ आई हैव 10,000 इंफॉर्मेशन ऑफ माई एम्प्लॉयज, मेरे को समझ में आना चाहिए कि हाउ मच इंफॉर्मेशन, कितने एम्प्लॉयज यहाँ पे काउंट काम कर रहे हैं, तो उसका काउंट लिया है हम। दिस इज, दिस टू आर इंस्टेंस वन, दिस इज इंस्टेंस टू, एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू, और वो दोनों का काउंट है कि कितने एम्प्लॉयज हैं। ये वाला, ये जो फंक्शन है ना एम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय राइट, ये हमारा क्लास नेम है, और ये एम्प्लॉय काउंट। शुरू में हमने जीरो रखा था ना, इनिशियलाइज यहाँ पे जीरो को किया, राइट। जिस तरह से हमारे इंस्टेंसेस क्रिएट होते जाएंगे वो काउंट करता जाएगा। तो हमने उसको क्लास का रेफरेंस दिया कि भाई तू क्लास में के फंक्शन को कॉल कर, एंड यू हैव अ वेरिएबल विच कीप द रिकॉर्ड ऑफ इंस्टेंसेस। तो जितने इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं विल ट्रीट एज की उतने एम्प्लॉयज हैं हमारे क्लास में। द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वो डिस्प्ले करता है, एंड वी ट्रीट दिस एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके। Okay, so I'll say this. So we'll stop here today. I'll share you this file. राइट, कल हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड ट्रिकी। मल्टीपल क्लासेस होंगे उसमें, आप एक क्लास में एट्रीब्यूट लिखेंगे तो दूसरी क्लास में वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। uh, कुछ दूसरे फंक्शंस एज ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, these concepts will be covering tomorrow. Okay, so I'll stop the screen share. We have few more minutes. अगर आपको कोई कुछ क्वेरी पूछना है तो you can ask here. Otherwise, we'll stop here today. Thank you so much, sir. Thank you guys for the joining. Okay.